Hello everyone, I welcome you all to LaunchPad Education Punjab. How are you all? A very good morning. Geet, Jas, Anjali, how is everyone? I welcome you to the session of final revision for Naib Tehsildar exam, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ various subjects ਦੇ MCQ solve ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ and ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ we are going to cover economy and current affairs. ਜਿੰਨੇ ਵੀ current affairs ਆਪਾਂ cover ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ economy ਦੇ part ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ and economy ਦਾ ਕੁਝ static portion ਵੀ ਆਪਾਂ share ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ discuss ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ important concepts, ਸਾਰੇ important current affairs. So session ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ share ਕਰ ਦਿਓ with your friends, with your WhatsApp groups and everywhere, right? सो लैक्चर का जो PDF है वो तुहानू साडे टेलीग्राम चैनल लॉन्चपैड एजुकेशन पंजाब तो मिल जाएगा. अदर दैन दैट UPSC PCS बैचेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. तुसी बैचेस विच एनरोल करा सकते हो. मॉर्निंग इवनिंग बैचेस ने एंड वन थिंग कि आपां यूट्यूब ते जिन्ना भी कंटेंट तुहानू प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एक लिमिटेशन है कि आपां इत्ते सारा कुछ कवर नहीं करा सकते, राइट. ये क्वेश्चंस केवल तुहाडे पैचेस एंड कुछ एरियाज कवर करदे फॉर ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन. तुसीं साडे बैचेस विच एनरोल कर सकते हो. Offline online classes available ne and the course fee includes even the study material and the standard books जो तुसी पढ़नी है अपने एग्जाम ਲਈ, right. This year you all know कि ਹੁਣ ਤਾਂ एग्जाम्स आने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारी नोटिफिकेशंस ऑलरेडी आ चुकी हैं एंड PCS ਦੀ नोटिफिकेशन भी सून एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी. एंड दीज आर द कोर्सेज जो भी अवेलेबल ने जो ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ एनरोल कर सकते हो एंड कोर्सेज ਦੀ इन्फॉर्मेशन ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ कर सकते हो. दैन डिस्क्रिप्शन में तुहानू लिंक दिता गया है साडी वैबसाइट का. वैबसाइट पर विजिट करके तुसी PDFs लै सकते हो, NCERTs के कोर्स कंटेंट देख सकते हो एंड द कोर्सेज एंड द टेस्ट सीरीज जी तुहानू मिल सकती है, ठीक है. दैन मूविंग ऑन टू द फर्स्ट MCQ फॉर द डे. ट्राई टू अटेम्प्ट द MCQs क्विकली क्योंकि आप घट टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जी कवर करनी है एंड आई एम ऑल्सो गुड. थैंक यू अंजलि. सेशन में एक बार शेयर कर दो विद योर फ्रेंड्स एंड योर WhatsApp ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स. ओके, सो स्टार्टिंग. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस. ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है इन्फ्लेशन नू मेजर करन दा. देन एज अ टूल टू मॉनिटर द प्राइस स्टेबिलिटी. देन एज डिफ्लेटर ऑफ नेशनल अकाउंट्स. CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड WPI साढ़े को प्राइस इंडेक्सेस ने. ओके, वी हैव द आंसर A गिवन बाय गोविंद एंड दुपिंदर एज अ deflator in the national accounts. This is not where CPI is used. Answer to this question is D 1, 2 and 3. I think तुसी deflator नू यूज किया होगा GDP deflator नाल ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ करंट एंड कॉन्स्टेंट प्राइसेस नाल करते हैं. दिस इज GDP ऑफ डिफ्लेटर ऑफ द नैशनल अकाउंट्स. नेशन के अकाउंट्स जो भी चेंजेस आते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन अकाउंट्स में चेंजेस तो आएंगे, राइट. इन्फ्लेशन का मेजर है, प्राइस स्टेबिलिटी को मॉनिटर करता है कि प्राइस कितना कुछ स्टेबल है, राइट. एंड देन इट मेजर्स द डिफ्लेशन इन द नैशनल अकाउंट्स. आई होप तुहानू समझ आ गया होगा कि डिफ्लेशन इन नैशनल अकाउंट्स किवें है क्योंकि इन्फ्लेशन मेजर कर रहा है, अकाउंट्स में चेंजेस तो आएंगे. ओके, I hope it is clear. Moving on to the next MCQ with reference to Index of Industrial Production IIP. तुसी देखनी है correct statements. IIP's detail is an index which details about the growth of various sectors. It is combined and published monthly by CSO, Central Statistical Organization, 6 weeks after the month ends. Then इधर बेस ईयर जड़ा है दैट इज 2004 and 5. ओके दुपिंदर, ओके सारे जाने ट्राई टू मेक द सेशन इंटरैक्टिव. योर एडिशनल इंफॉर्मेशन इज मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन. बी अ लिटिल क्विक. ओके, वी हैव गॉट द फर्स्ट आंसर A. ओके, एनी मोर आंसर्स? B 1 and 2. व्हाट इज द बेस ईयर? राखी. A बेस ईयर केड़ा है? आंसर इज B 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट. व्हाट इज द बेस ईयर फॉर IIP इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. व्हाट इज द बेस ईयर? बेस ईयर्स कवर करने बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 2011 and 12. गोविंद मिश्रा. दुपिंदर करेक्ट, वेरी नाइस. मूविंग ऑन.
Which of the following statement is correct regarding Monetary Policy Committee? It decides the RBI's benchmark interest rate. Then a 12-member body है which includes Governor of RBI and is reconstituted every year. It functions under the chairmanship of Union Finance Minister. I think third statement is the most easiest. Okay, Govind has given the first answer, A. जिमें कि होता है Monetary Policy Committee meets at least 4 times in a year, right? कितनी member body है? At least 14 people are watching this live session. I wonder कि आप सोच रहे हैं? Okay, RBI Governor is the chairman and it is a 6-member body. 3 members जेडे हैं, it is a 6-member body. 3 members from RBI and other 3 members are from central government. Answer is A, 1 only. Okay, yes, 3 from government as well. ठीक है जी, and chairmanship किधर अंडर है? Governor of RBI. Who is right now the Governor of RBI? And कितनी देर तक tenure extend किया गया? Present Governor दा. This was also in news, right? Next, which of the following are the quantitative tools of monetary policy? दो तरह के tools है, quantitative and qualitative. तो हम quantitative tools पूछ रहे हैं. CRR, SLR, credit rationing, then we have this repo rate, MSF, marginal standing facility, and then we have this moral suasion. Then open market operation, liquidity adjustments facility, and then we have a CRR. And D statement says SLR, bank rate, direct action. Correct? Yes, he is the present governor, right? Okay, first answer we have got from Raki, says C. Open market operation, liquidity adjustment facility and cash reserve ratio. Correct, answer is C. Idhron the credit rationing, moral suasion and direct action. These are the terms associated with qualitative measures of controlling the money supply by monetary policy. ठीक है जी. Moving on to the next question. Which of the following statement is not correct regarding the different shapes of economic recovery? ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ 3 times a week ਸਰ ਲੈਂਦੇ ਆ and I think ਇਹ concept ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ regarding the shapes of recovery. ठीक है, first ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ the Z shape economic recovery disruption lasts for a small period of time wherein ਲੋਕਾਂ ਦੀ more than people's income, it is their ability to spend is restricted. यानी कि लोगों ਦੀ income ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ spend ਕਰਨ ਦੀ capacity ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? Z shaped economic disruption ਵਿੱਚ. In V shaped, the incomes and jobs are permanently lost and economic growth recovers gradually. U shaped economy after falling struggles around low growth rate for some time before rising gradually to the usual levels. K-shaped recovery कहती है after a recession, different parts of the economy recover at different rates, times and magnitudes. K-shaped ਦੇ under different sectors, different rate ਦੇ ਉੱਤੇ grow ਕਰਦੇ हैं, different magnitudes ਦੇ ਉੱਤੇ grow ਕਰਦੇ हैं. Go on. Read the statements. This is very important concept because this was in news, right? Okay, we have got the answer. Okay, B is incorrect. Recovery is steep. Okay, economy ਜਿਹੜੀ ਹੈ that gets back to the normal working level very quickly in the V-shaped recovery. Okay, answer is B statement incorrect है. ਜਿਹੜੀ statement ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ that jobs are permanently lost and economic growth ਜਿਹੜੀ ਹੈ that recovers gradually. ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ shape ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ recovery ਦਾ phase ਹੈ ਜਿੱਥੇ jobs ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ permanently they are lost and economic growth recovers gradually. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ shape ਹੈ? ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ concept new ਹੈ? Please raise your hands because this is an important one. News ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, budget ਵਿੱਚ ਵੀ discuss ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. Do we have the answers?
only K. Okay, this is L-shaped recovery. जिथे jobs are permanently lost, downfall हो रहा है, then it becomes stable. Economic growth recovers gradually. Downfall तो बाद situation ਜਿਹੜੀ ਹੈ that becomes stable. ठीक है, ਇਹ ਜਿਹੜੀ statement ਹੈ ਇਹ L-shaped curve ਦੇ ਨਾਲ refer ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. I hope clear हो गया होगा. जिन्होंने नहीं पता बाकी statements absolutely correct है. K, U and Z. Then आप additional एक L पढ़ी है. Moving on, which of the following is or are the objectives of disinvestment in India? Reducing the fiscal burden on the exchequer, then encouraging private ownership, maintaining and promoting competition in the market. Options 1, 2 and 3, 1 and 3, and then we have is 1, 2 and 3. हाँ, इकोनॉमी नेवर रिकवर्स, इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है एक टाइम तो बाद, मतलब जो डाउनफॉल हो रहा है ना, डाउनफॉल होने तो बाद इट ग्रेजुअली बिकम्स स्टेबल. तो उसी रिकवरी फेज कहने, रिकवरी फेज क्यों कहने, बिकॉज डाउनफॉल जो है उस पॉइंट पे आके रुक जाता है. आई होप रॉली योर डाउट इज क्लियर. ओके, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है जी. डिसइन्वेस्टमेंट वास्ते केड़ी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, केड़ा डिपार्टमेंट एंड वो डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर disinvestment in the country. First statement is correct. Okay, Department of Investment and Public Asset Management under Ministry of Finance. ठीक है जी, I hope clear हो गया सारे हम. Right, Finance Ministry. Moving on to the next question. Which of the following reports are published by IMF? Global Economic Prospects, World Economic Outlook, Global Financial Stability Report, and then we have this Fiscal Monitor. Options 1, 2, 3, then we have is 2 and 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Reports are very important. Go on. First answer we have got all. अगर मैं इंडिविजुअली पूछना सीखा दैट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स किदे द्वारा रिलीज की जाती है, 1, 2, 3. Are you sure? Any more answers? 2, 3, 4. Rolly has answered. Okay. Any more answers? 2, 3, 4 तो पक्का है. ओके. वर्ल्ड बैंक. करेक्ट आंसर इज C. 2, 3 and 4 जड़ियां है दैट आर पब्लिश्ड बाय IMF. ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट IMF द्वारा पब्लिश नहीं की जाती. इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक. राइट, दिस इज द लेवल ऑफ इकोनॉमी क्वेश्चंस जो तुसी अपने एग्जाम में सॉल्व करके जाने हैं, प्रैक्टिस करके जानी है. राइट, वन लाइनर्स सॉल्व करके अपनी ईगो बूस्ट ना करियो. मूविंग ऑन. हुण इत्थे तुहानू लूप होल्स पता लग रहे होंगे किहड़े-किहड़े एरियाज है जिथे तुसी काम करना है, पर्टिकुलरली इकोनॉमी विच. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स फिलिप्स कर्व? मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन. Phillips curve. It is used to show the relationship between tax rate and amount of tax revenue जो government collect कर दी है. Graphic representation है income and wealth distribution का. Then it states that changes in unemployment within an economy has predictable effect on price inflation. Then it explains the phenomena where countries' balance of trade initially worsens following a devaluation or depreciation of its currency. The most easiest question. C. Okay. Bina, Rakhi, Rolly, Govind. Correct. Answer is C. Distribution of income and wealth is shown in Phillips curve. Easiest question. Answers the speed अथे हो गई सी तेज. Next, current affair का question है. With reference to Amrut Mission, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, recently that tenure जेड़ा है that has been extended. ठीक है? Then, okay, what happened? It is C.
Moving on to the next question. Amrut mission, it comes under the Ministry of Jal Shakti. Then one of the purpose is to ensure that every household has access to tap with assured supply of water and sewage connection. Okay, it is C. Go on. अमृत मिशन के बारे करेक्ट स्टेटमेंट तुसी दसनी है. D, none of the above. Are you sure? D. Okay. देखो सोल पर्पस नहीं दिता गया. 2024 वाला एक इनिशिएटिव है, 2024 डेडलाइन है टैप वाटर इंश्योर करन दी. It's one of the purpose is to ensure that कि every household ਨੂੰ supply of water connection ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ. ਇਹ one of the objective ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, sole objective नहीं है. Answer is B. Second statement is correct. Ministry ਕਿਹੜੀ ਹੈ? Is it under Ministry of Jal Shakti? Ministry of Housing and Urban Affairs. Statement ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ. It's one of the purpose is. अगर कोई भी ਤੁਹਾਨੂੰ गवर्नमेंट ਦੀ स्कीम आ रही है सोली पूछा जाए जी 2024 वाली स्कीम सी वो कड़ी सी कैन टेल मी जी डेडलाइन 2024 है फॉर प्रोवाइडिंग टैप्ड वाटर टू एवरी हाउस होल्ड. ठीक है. सो वन ऑफ द इनिशिएटिव कैन बी अंडर द ब्रॉडर गवर्नमेंट स्कीम. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जल जीवन मिशन. आ गया क्वेश्चन. It aims to ensure tap water supply to rural households by 2030. Then the funding sharing pattern between the center and states is 90:10 for Himalayas and northeastern states. हुने question discuss कीता है, answer discuss कीता है. I hope you might be knowing. 100% जेडी finance the sharing pattern है that will be done for the union territories, 50-50 for states ਜਿਹੜੀ normal states है between center and state ਉਹਨਾਂ ਦੀ ratio, and for Himalayan and northeastern state that is 90:10. and ਇਹਦੀ deadline ਕਿਹੜੀ ਹੈ 2024. ठीक है. सो ऐसे करके दो क्वेश्चन इकट्ठे सीखे so that ਤੁਹਾਨੂੰ डिफरेंस समझ आ सके. नेक्स्ट, which of the following releases global risk report? WHO, World Economic Forum, WTO, then International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Go on. Category wise 5 risk ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ associate ਕਰਦੇ ਹੈ for economic risks, environmental risks, geographical risks, societal and technological risks. It is released by World Economic Forum. Great. Meenu, Veena, Rakhi, Anjali. Next, consider the following statement. The bad bank is involved in lending and taking deposits. It also helps commercial banks clean up their balance sheet and resolve the bad loans. Then the takeover of the bad loans by the bad banks is usually जिन्नी loan amount है ਜਿਹੜੀ ਰੀਪੇ नहीं ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੀ बुक value ਤੋਂ lesser amount ਦੇ ਉੱਤੇ take over ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. बैड बैंक्स के बारे में स्टेटमेंट दे रखी है एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई एम अज्यूमिंग कि तुसीं किते ना किते जरूर पढ़िया होएगा, होर नहीं तो लॉन्चपैड की जिहड़ी करंट अफेयर क्लासेस लग रही हैं उत्थे जरूर पढ़िया होएगा. सो यू हैव डबल रिविजन. ओके, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. बोथ द स्टेटमेंट्स इज नॉट द करेक्ट आंसर. बिंगो. फर्स्ट स्टेटमेंट ध्यान ना पढ़ियो. बैड बैंक्स जिहड़े है लैंडिंग एंड डिपॉजिट्स दे फंक्शन विच एंगेज करते हैं, लैंडिंग करते हैं बैड बैंक्स. ऑफ कोर्स बैंक्स दे जिहड़े बैलेंस शीट्स है उन्हां दे बैड लोन्स नूं रिकवर करन दा काम बैड बैंक्स कोल है, पॉपुलरली नोन एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी. राइट. पेपर विच मार्क करके आना से असी बोथ. आंसर इज ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. ज्योति. ओके. Moving on to the next question. Consider the following statement. Fiscal deficit is the difference between total expenditure and sum of revenue expenditure and non-debt revenue receipts and non-debt receipts. यानी कि difference between
expenditure and receipts. Then primary deficit is derived by deducting capital expenditure from fiscal deficits. Which is the correct statement? Easiest question. 1, 2, both, and then we have is neither. BOP वाले chapter जो economy जो जेडे formulas है, do revise that. Okay. What is the answer? We still have answer D. Okay. Answer जिन्होंने पता लग गया उन logic दस दियो that why statement 1 is correct. What is wrong with statement 2? Primary deficit कितना निकल रहा है? How is primary deficit calculated? Fiscal minus interest payments. Correct. Yes, Rolly. ठीक है जी. So primary deficit the formula ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ गलत ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है. This is revenue deficit. ਜਿਹੜੀ definition ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ठीक है. Moving on to the next question. Consider the following statement. Gujarat has topped the composite ranking of Good Governance Index 2021 and it is prepared by Niti Aayog. हाँ, लेस बोरिंग्स बिल्कुल बिना एजुकेशन करेक्ट. बोरिंग माइनस होंदी है, लेकिन पिछले क्वेश्चन तो सीधा सीधा सानू स्टेटमेंट ही पूरी गलत दी गई सी ना. यस यस, लेस बोरिंग वाला ही है. ओके, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. It is released by Niti Aayog. Jyoti has given answer 1 only. Both is not the correct answer. 2 only. Department of Administrative Reforms and Public Grievances का नाम किसी ने सुना है? सुने किसी ने नाम या पहली बार सुन रहे हो? गुड गवर्नेंस डे किस दिन मनाया जाता है? This was also very much in news. It is not issued by Niti Aayog. Both वाले Department of Administrative Reforms and Public Grievances सुना सबने है, लेकिन यहाँ पर गलत मार्क किया है. गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th of December. This is the level of questions and you can analyze कि ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ. ठीक है जी. Moving on. The Hyderabad Declaration recently news which देखा गया सी. It is related to civil policing, disaster management, e-governance, and then we have is agriculture. Yes, Jyoti, you had given the correct answer. Good. Hyderabad Declaration recently news which देखा गया सीगा. It is related to what? Ministry of Electronics ने Hyderabad Declaration Ministry of Electronics दी कुछ meet हुई सी जिते Hyderabad Declaration was adopted. It is related to e-governance. Correct. Answer is C, e-governance. बस इतना याद रखियो. Ministry के लिए associated है Ministry of Electronics, right? To bring people and government closer to each other. Okay. Moving on to the next question. PM Mitra Parks. Recently news which देखे गए हैं किधर नाल related है? Option textile, skill development, disaster management, and then we have is solar energy. PM Mitra Park. Okay. किन्ने PM Mitra Park ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦਾ aim ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? How many Mitra Parks and deadline ਕੀ ਹੈ? What is the deadline? 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ PM Mitra scheme ਦੇ ਅੰਡਰ and the deadline is 2027 28 or 27 28. ठीक है? 7 correct. Moving on. The sunset review often seen in news is related to World Health Organization, International Monetary Fund, World Bank, and then we have is WTO. Go on.
Okay, any more answers? WTO, we have got the first answer from Raleigh. बिना करंट अफेयर्स दी क्लासेस सारियां लॉन्च पैड ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ एवरी वीक ਆਪਾਂ 3 4 5 ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ right it is related to anti dumping duties and it is related to world trade organization ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੰਪਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਡੰਪਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਰਾਈਟ सो इट इज डन बाय WTO तो सनसेट रिव्यू ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ याद रखना है कि डंपिंग ਨਾਲ रिलेटेड है और एंटी डंपिंग ऑलराइट चलिए अगले क्वेश्चन थे ग्रेट मूविंग ऑन द टर्म स्मॉफिंग ऑफन तेनू न्यूज विच देखा गया है इट इज रिलेटेड टू ग्लोबल ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म मनी लॉन्ड्रिंग टेक्निक इंसॉल्वेंसी एंड रिकवरिंग ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिन्होंने भी डाउट है कि आप करंट अफेयर्स कितों करने हैं यू कैन डू द करंट अफेयर्स जिनमें बहुत सारे सेशंस लग रहे हैं एंड वी आर डूइंग द मोस्ट रेलिवेंट करंट अफेयर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है वी कीप सेइंग वन लाइनर्स नाल यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर वन लाइनर्स आंदे इदां दे क्वेश्चंस ओके बी मनी लॉन्ड्रिंग टेक्निक दे तहत ਸਮਰਫਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਅਮਾਉਂਟਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਆਏ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਸਮਰਫਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਇਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਠੀਕ ਹੈ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बिहार जड़ा है दैट हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल of state population. National Family Health Survey 4 data has been used to derive an idea of baseline multidimensional poverty in India. Go on. FATF control is the one organization ਜਿਹੜੀ money laundering ਦੇ cases ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ correct C. Govind, read this statement carefully. Bihar has the highest population of multi-dimensional poor people. The base te hi hoi na sab to zyada. Bihar has the lowest. Are you sure? Okay. Highest malnutritioned people are also in Bihar. अगर इसी data के according मॉल न्यूट्रिशन की गल करिए तो दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम इन स्टेट ऑफ बिहार ठीक है हाय जस्ट करण ओके कविता करेक्ट चलो जी मूविंग ऑन विद रेफरेंस टू आयुष भारत मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट एम्स टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ ID फॉर ऑल सिटीजन्स बिलो पॉवर्टी लाइन ओनली देन द health account will contain details of every test, every disease, every doctor's visits and जिन्नी भी medicines and diagnosis जेड़े है patient द्वारा avail किते गए है Kerala has the lowest correct ठीक है so exam विच ये सब points नहीं है जिथे तुसी confused this is not at all acceptable अगर तुसी current affairs चंगी तरह कीते हैं two only okay it is for all citizens okay B is correct okay ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ health ID cards ਮਿਲਣਗੇ is it voluntary or involuntary to enroll under Ayushman Bharat Digital Mission it is on voluntary basis correct great moving on the migration and development brief report किहदे द्वारा रिलीज कीती जाती है options United Nations Population Fund, World Bank, International Organization for Migration, UNDP. It is voluntary. Correct. So, ध्यान रखियो voluntary, involuntary वाला scenario. Go on. Migration and Development Brief report जड़ी है कौन जारी करता है? UNDP.
Okay, any more answers? How many of you are guessing? Guess वाले कितने हैं? Okay, first answer C, D, then B. किसी का आंसर A नहीं है? A वाला कोई है? It is B, World Bank, Migration and Development Brief. Reports and indices, very important. The Sarthi app, recently ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ news ਦੇ ਵਿੱਚ, it is related to old age pension, women protection, securities market, and then we have is child development. Sarthi app, very easy question, काफी बार करंट अफेयर्स छापा किया है. सिक्योरिटीज, ओके, किदा इनिशिएटिव है सारथी ऐप? सेबी, गोविंद, करेक्ट, ताकि इन्वेस्टर्स ਨੂੰ अवेयर कराना अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, अवेयरनेस दिलवानी इन्वेस्टर्स ਨੂੰ. इजी क्वेश्चन सी. मूविंग ऑन. कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग पर्वतमाला. अगेन यूनियन बजट विच पर्वतमाला दी बारे गल हुई है, राइट? Options: the aim is to improve connectivity to hill regions for military troop movement only. Then border road organization जो है वो sole organization है, nodal agency है इस स्कीम ਨੂੰ implement ਕਰਨ ਲਈ. बिना एजुकेशन इन्ने करंट अफेयर्स करे फिर भी नहीं आ रहे. ओके, एक बार अपने दिल ते हाथ रख के पूछो कि ਜਿਹੜੇ करंट अफेयर्स की तैयारी की है कि ਤੁਸੀਂ केवल वन लाइनर्स कवर किए हैं या ਤੁਸੀਂ ऐसे करंट अफेयर्स किए हैं ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट पीपीएससी ਦੇ एग्जाम ਨਾਲ रेलिवेंट है. ओके, वी हैव द आंसर्स. B2, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे ਜਿਹੜੀ है दैट विल be implementing and tourism ਨੂੰ improve ਕਰਨ ਲਈ. it is not by border road organization. okay, okay, statement questions ਕੀਤੇ ਹੈ, केवल one liners नहीं ਕੀਤੇ, then it's okay. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. you still have time, you still have approximately 20-25 days. ਇਹ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. that is why ਅਸੀਂ MCQ ਪਹਿਲੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, right? चलो जी, हौसला नहीं कट करना. इंस्टेड यू शुड बी मोर हैप्पी कि तुहानू पता लग गया कि किहड़े तुहाडे लूप होल्स किहड़े. अगेन तुसीं चेक कर सकते हो अपने करंट अफेयर्स की सीरीज लगा के, टेस्ट सीरीज लगा के. देयर इज ऑलवेज अ वे टू इंप्रूव. नेक्स्ट, पीएम गति शक्ति. रिसेंटली न्यूज़ विच देखा गया सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स इट? इंजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, then becoming global hub in wind energy, development of 5th generation stealth fighter craft, bringing hyperloop technology in India. Very easy question. Execute करना infrastructure projects नो, right? Answer is A, engine for infrastructural growth. ठीक है, जिन्हें भी approximately 16 ministries है जिन्हें दे infrastructure projects नो collaborate किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा for the development, for the execution. चलो जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. परिवेश पोर्टल, अगेन करंट अफेयर न्यूज़ विच देखा गया है कि रिलेटेड है. डिजिटल एजुकेशन प्रमोशन, हेल्थ सेक्टर, टैक्स कंप्लायंस, इन्वायरमेंट क्लियरेंस. परिवेश पोर्टल वेब बेस्ड पोर्टल है. किदा इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. रिमेंबर द मिनिस्ट्री. हुण मिनिस्ट्री नाल आई थिंक तुसीं आंसर दे सकते हो. इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. दे दो हुण आंसर्स. इट इज डी, करेक्ट. इन्वायरमेंट क्लीयरेंसेस, ताकि इन्वायरमेंट दे कोई भी प्रोजेक्ट्स नू अंडरटेक किया जाना होवे या फॉरेस्ट दे प्रोजेक्ट्स नू अंडरटेक किया जाना होवे बिटवीन द स्टेट्स, तां जिहड़ी क्लीयरेंस है वो ऑब्टेन की जा सकती है इस वेब पोर्टल तो. मूविंग ऑन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स मेजर अनाउंसमेंट्स जिहड़ी बजट विच कीतियां गईयां सी एंड किहड़े-किहड़े फील्ड दे नाल रिलेटेड है. फर्स्ट है देश स्टैक ई पोर्टल. इट इज रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स. पीएम डिवाइन is related to elementary education for school children.
सनराइज अपॉर्चुनिटीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ that is genomics and pharmaceuticals. ਇਸ ਤੋਂ better ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਟਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਦਰ ਦੇਸ਼ ਟੈਕ ਈ ਪੋਰਟਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਪੀਐਮ ਡਿਵਾਈਨ, ਸਨਰਾइज अपॉर्चुनिटीज, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हेलो ब्रांडेड शूज इंडिया, सेकंड इज रॉन्ग, 3 ओनली, ओके। पीएम डिवाइन ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ क्वेश्चन। पीएम डिवाइन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ work for northeastern states. They stack e-portal citizens ਦੇ skills ਨੂੰ develop ਕਰਨ ਲਈ, and sunrise opportunities ਵਾਲੇ fields ਕਿਹੜੇ ਹੈ? genomics and pharmaceutical, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ growth ਦੇ prospects ਹੈ। okay, moving on, theme of economic survey 2021-22 ਬਹੁਤ ਹੀ question ਆਪਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਘਿਸਾ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, 5-6 ਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। I don't think ਮੈਨੂੰ options read ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ simple question ਹੈ। Theme of Economic Survey 2021-22. Easy, agile approach. In context of Economic Survey 2021, what does the term pretense to knowledge imply? False pretension to know or be something, ताकि आप लोगों को deceive कर सकिए। Then the idea that prior belief should be updated, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। the propensity to create even more detailed plans and regulations, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ forecasting ਦੇ models ਨੂੰ elaborate ਕਰ ਸਕੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ prediction ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ strong ਹੋ। D statement ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ none of the above. due to COVID-19 pandemic, economy ਜਿਹੜੀ ਹੈ the country is very unpredictable, economy is unpredictable ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ the pretense to knowledge is talked about in economic survey, which means propensity to create even more detailed plans। ਅਸੀਂ ਐਸੇ plans ਨੂੰ develop ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ contingencies ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ challenges ਹੈ ਉਹਨੂੰ better forecast ਕਰ ਸਕੀਏ। this is the meaning of pretense of knowledge, ਜੋ term use ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ economic survey 2021-22। okay, moving on to the next question. According to Economic Survey 2021-22, consider the following statement. India has been the 5th largest recipient of FDI in the previous year. Then objective of Sagarmala project की है reduce the logistic cost for import, export and domestic trade. Individually Sagarmala ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ question ਤੁਸੀਂ expect ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, because करंट अफेयर विच है, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। B, 2 only. Any more answers? First कौन है? First कौन है? Okay, are you sure that first statement is wrong, that India is the 5th? नहीं है? Okay, answer is C, both the statements are correct. India is the 5th largest recipient of foreign direct investment in year 2020-21, and Sagarmala project ਜਿਹੜਾ ਹੈ of course ਜਿਹੜੀ logistic cost, import export and domestic trade which involved है ਉਹਨੂੰ ਕਰੇਗਾ control। 5th largest, ठीक है। Moving on, Swift messaging system recently देखा गया सी news ਦੇ ਵਿੱਚ। It is related to which of the following? Secure international financial transactions, then indigenous messaging application of India, global spyware network, and then we have this surveillance system of
Russia. Go on. About Swift messaging system, recently news which देखा गया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ਜਿਹੜੇ विदिन अपने ही अंदर इन्फॉर्मेशन ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸਿਕਿਉਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ financial transactions. Correct. Swift messaging system. Okay. So with this we are done for the MCQs ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ static portion ਦੇ ਸੀ economy ਦੇ and ਕੁਝ questions ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ current affairs ਦੇ ਸੀਗੇ. I hope session fruitful ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ and it added on to your information. Of course ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ loopholes ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ. Once again we are offering test series so that ਤੁਸੀਂ exam ਵਿੱਚ mistakes ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ अपनी मिस्टेक्स टेस्ट सीरीज विच कर लो तो एग्जाम में जाके ना करो, राइट? टेस्ट सीरीज इज वन ऑफ द बेस्ट वे जिन्हें तुसी अपनी परफॉर्मेंस जिहड़ी है जज कर सकते हो. कोर्सेज आर अवेलेबल, यू कैन गो चेक आउट ऑन द वैबसाइट जिहड़ा लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिता है. काफ़ी सारी एग्जाम दी डेट्स जिहड़ियां है वो एक्सपैक्टेड है, सून नोटिफिकेशंस आर आउट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट प्रिपेयरिंग. कोई भी इन्फॉर्मेशन एग्जाम रिलेटेड चाहिए हुई, कोर्सेज रिलेटेड चाहिए हुई, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन आवर नंबर्स. ठीक है, टीम इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू. ठीक है जी, थैंक यू, हैव अ गुड डे. एंड 12 बजे देयर इज गोइंग टू बी अ सैशन ऑन लॉन्चपैड IAS जिथे आप डिस्कस करने हैं जो सॉइल्स ऑफ इंडिया एंड वेजिटेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, वो सारा कुछ आप कॉन्सैप्ट्स कवर करेंगे. थैंक यू राखी. ओके, सी यू.